Hello friends, let's watch this. This is beautiful animation. I really love the timing and overall rhythm of the shot. Very nice. Super cartoony. Wow. This Smurf is running and oh no. Awesome. Super nice. Yeah. Let's try to analyze this animation, and we will try to find some areas where we can improve. The starting is super nice. I feel like this door has a lot of like push up over here, लेकिन ये यहाँ पे ease in हो रहा है last pose में, so we can just overshoot and settle back maybe to really have that push feel. So right now like we have a lot of energy acted on this door और वो यहाँ पे die हो गई है. So maybe we can overshoot and settle back for this door. For this Smurf, this is super nice. I really love that. I can see the eyes, they are little open. इसको आप बिल्कुल क्लोज कर लो क्योंकि हमें ये वाइट एरिया नज़र आ रहा है आइज के अराउंड, विच इज़ नॉट गुड. सो वी कैन प्रूव दैट. एंड दिस हैंड इज स्टक फॉर लाइक couple of frames. We can improve that. Maybe ये hand थोड़ा सा नीचे होगा and then it will come up like this, and then here maybe, and then it will be like this maybe, और उसके बाद ये यहाँ पे आ सकता है. And then we can go to this pose we already have maybe, or maybe we can have this kind of pose. For this hand, for his right hand, I feel like he can use this hand to push the door. तो अभी क्या हो रहा है, it is staying in the same angle. We can rotate that back. तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ rotate, you can do that to really push the door, उस idea को push करने के लिए, or maybe you can make it forward. It is up to you actually. Even you can lean a little bit with your body over here. थोड़ा सा lean करेगा इधर ताकि वो push की feel को हम लोग sell कर सकें. The timing is nice. And then because he's changing direction, we have to bring our legs forward first ताकि वो जो उसने मोमेंटम गेन किया है उसकी रेजिस्टेंस क्रिएट हो सके. तो our legs will become forward and they will try to push us back. You can bring them forward over here. इसकी सिल्हूट को क्लियर करने के लिए we can bring the hand up over here because right now it is destroying the silhouette of the overall body. So इस hand को आप ऊपर ले आओ, इस arm को ऊपर ले आओ and really try to polish this thing. Like same over here, try to clear the silhouette of the hand, and you can use these legs to push off from the ground. उसको push करेगा पीछे की तरफ settle करने के लिए because he was in a lot of momentum. तो उसको compensate करने के लिए we have to use our legs. Same over here, इसकी arms को आप यहाँ पे रखो, इसकी silhouette को clear करो, and then he's changing his direction from right to left. तो उसके लिए हमें एक अच्छा सा flow चाहिए. So right now I can feel that we already have something over here which is nice, but there is no gathering of energy over here. Right now we have to gather energy and then we have to push to the left side. So you can use your legs to generate that energy over here. Yeah, maybe you can bring the hip up and then we will have this leg down there and this leg will be here, and then we can clear the silhouette by bringing this arm over here. And same for this pose, maybe we can bring this leg over here because उसने legs को use करते हुए energy को gain करना, then he have to push to the left side. Okay, so same for this, we can bring this leg back a little bit to have this line of action really going forward like this. इसको lean करना है आगे की तरफ because he's running, so you can bring that over here. Try to clear this hand too, like इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, so we'll have nice silhouette, nice flow for the pose. And then you can bring this arm a little maybe early over here, or maybe you can add a smear frame over here. This is nice. I can feel that you can use your legs still because you are making this force over here with the legs. उसको running करनी है, so maybe you can use multiples. Up to you man, if you want to use
you can use that. Over here we have nice area, we can use multiple legs maybe, because there is no motion blur and the animation is so snappy, so we have margin to do that. Same over here, I will use multiples, or I will use like smear frames for the head, because यहाँ से और यहाँ तक spacing is huge. जब spacing बहुत ज़्यादा होती है, so we can use multiples, or we can exaggerate that. Like let's say this ball is going in one frame, maybe 2 frame from here to here, तो middle में जो frame है उसको मैं थोड़ा सा exaggerate करता हूँ, उसको smear frame ऐड करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो spacing है उसके gap को fill in कर सके. And over here I feel like कि हम lead and follow का rule apply कर सकते हैं, because from he is coming from right to left, he is changing direction. Okay, so over here maybe you can clear the silhouette, always try to clear the silhouette, and then maybe keep the head over here, it is nice, but इसको आप turn कर लो, and then you can bring this hip area a little back, ये बाद में आएगा, और उसके बाद उसका head lead करेगा, and then you can use the force overall line of action को exaggerate करो, and then use your legs. In arms को you can always try to find a nice path of action for the arms, nice flow, and then you can bring this over here. So over here maybe you can bring this arm up to really have this like a squash kind of feel, and then उसको stretch करो. Over here we have stretch pose, यहाँ पे ये stretch pose है, ये squash pose है, तो हमें एक अच्छा कंट्रास्ट मिल जाएगा एनर्जी गैदर करने के लिए. And then you can use your pose, but always try to exaggerate the legs, because they are the one who is generating the energy overall. उसके बाद you can, this is super nice, this area is very nice, I love that. What you can do, maybe you can just, for hand poses you can maybe bring this pinky a little down, and maybe bring this guy a little over here, तो हमें एक अच्छा सा contrast मिल जाएगा, pose मिल जाएगा for our hands. Right now I feel like they are equally spread out. Okay, so we can make it better. Mouth shapes are nice. The overall animation over here is super nice. पहली में जो settle है, it is super nice. I love that. Eyes का पहले जाना, and then he's turning his head is super nice. Same over here, I love that. Looking up, and then this one is I really like that too, coming down. Maybe you can like add a one ease out from that, if it is up to you. And one thing you can add up, maybe उसकी eyes थोड़ी सी यूँ खुल जाएंगी, maybe 1 or 2 frame, तो इसने यूँ ऊपर देखा, and then his eyes will pop up like, and then for 2 frames are enough. 2 frames के लिए आप इनको थोड़ा सा open wide कर दो, to have this kind of thinking process or shock kind of feel, कि जैसे कोई चीज़ आ रही है, like he was normal looking up, and then suddenly something is coming to him to catch him. तो इन eyes को, बाकी body वहीं पे रहेगी, but for 2 frames his eyes will pop up, and then he can go into this pose. And you can keep, for this arm you can keep this arm maybe here, a little delay in the arm, this is nice, but you can try to see where is the last pose, और उसको देखते हुए हम लोग थोड़ा सा drag ऐड कर सकते हैं fingers में. I love this one, super nice, overshoot, settle back, beautiful timing over here, and then we zoom out, which is super nice to reveal this character. So इस character के लिए I can feel like we can improve the pose over here. Right now the elbow, you can bring the elbow up like this, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आओ, and then you can improve this pose by bringing this elbow up. तो हमें एक अच्छा सा rhythm मिल जाएगा pose में, from here to here. Okay, और अभी इसका head is too symmetrical, इसको थोड़ा सा rotate करो नीचे, थोड़ा सा, मतलब you can break the symmetry by rotating the head like this maybe. This elbow will be here, and then you can bring it down maybe, super nice. And yeah, this pose will be like ये elbow ऊपर होगी, and then this very nice unsymmetrical pose.
you can improve that pose, the facial pose. Right now it is too symmetrical. और ये मतलब नीचे देखता हुआ भी नहीं लग रहा, तो maybe you can rotate this and then he will be looking down like this. और maybe एक eyebrow थोड़ा सा नीचे आएगा and then one will be up. और उसमें तुम jaw को rotate कर सकते हो, which will break the symmetry. The line of action कुछ यूँ होगी इस तरह से, and he will be looking down. Same over here, man. He is going to do a big action. तो हम क्या करेंगे Smurf के लिए, he will have something in the facial pose before he go into action. तो कोई भी एक्शन है उसको लीड करने के लिए हम क्या करते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं उस एक्शन से पहले, ताकि हमें एक थिंकिंग प्रोसेस मिल जाए, हमें कुछ चीज़ें मिल जाए जो लीड करें उस एक्शन की तरफ. राइट नाउ वी डोंट हैव दैट. इट कुड बी एंटिसिपेशन टू, मे बी थोड़ी सी एंटिसिपेशन हम डाल सकते हैं बिफोर दिस बिग एक्शन ओवर हेयर. सो मे बी यू कैन ब्रिंग दिस गाय अ लिटिल अप एंड राइट. थोड़ा सा आप यूँ कर लो उसको, थोड़ा सा राइट मूव कर लो एंड देन मे बी अ लिटिल अप. और यहाँ पे एक्सप्रेशन उसका थोड़ा सा वाइड होगा, आईज वाइड हो जाएंगी एंड देन you can go into this antic pose. This arm is, you can bring it up a little bit. The eye blink, you can blink the eye because right now the eyes are open और उनका कोई कहीं पे focus नहीं है. And you can add nice drag over here. Improve this wrist, उसको rotate करो, silhouette को clear करो. And for one leg you can bring it out. क्योंकि ये यहाँ से चली थी leg, it has to drag a little bit. And then you can bring it up. और यहाँ पे ये ना थोड़ा सा फ्लोटी लग रहा है. आई रियली लाइक दिस, बट हेयर इट फील लाइक दिस फ्लोटी. सो मे बी यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ मे बी अप एंड डाउन और वाइब्रेशन ओवरऑल बॉडी. यू कैन डू दैट. मे बी ही इज शेकिंग हिज हेड एंड हिज फिंगर्स दे कैन बी लाइक डूइंग सम वाइब्रेशन और समथिंग लाइक दैट. तो उसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा हमारे पास. राइट नाउ इट इज एवरीथिंग इज लाइक गोइंग अप in one pose, which is too mechanical. And then you can maybe add antic a little bit, क्योंकि इतनी बड़ी मूव है उसको कुछ तो हमें चाहिए. लेग थोड़ी सी ऊपर जाएगी and then it will come down and you can really drag these arms behind. Okay, ये लेग यहाँ से यहाँ तक बड़ी स्पेसिंग तय करके आई है. It will be going down back a little bit. Right now it is too flat, so इस लेग को थोड़ा सा पीछे ले जाओ and this leg will be here to break the symmetry. और arms उसकी drag करेंगी पीछे and then you can have this antic pose over here. इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ and then really bend these legs like this. We will have this antic pose because after that he will be going forward. Forward जा रहा है, so we have to have some nice antic over here. And then you can continue path of action for the head. Head नीचे आ रहा है and then you can bring it down like this. अभी क्या हो रहा है कि इस पोज के बाद अचानक से हेड ऊपर आ जाता है एंड देन ही विल बी फ्लैट. सो उसको हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यूटी और ड्रैग ऐड कर सकते हैं, या पाथ ऑफ एक्शन को देखते हुए हम लोग आर्क्स को देख सकते हैं. तो राइट नाउ द आर्क ऑफ द हेड विल बी लाइक दिस. तो यू नीचे आएगा एंड देन इट कैन बी हेयर, द हेड कुड बी हेयर. और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कुछ एनर्जी को गैदर करने के लिए और ख़ुद को पुश करने के लिए हमें एक टांग को वी हैव टू ब्रिंग वन लेग बैक. ओके, तो यू कैन ब्रिंग मे बी दिस लेग बैक जो कि पुश कर रही है इसको ओवरऑल आगे की तरफ. अभी क्या हो रहा है कि उसकी वो वाली लेग यूज़ हो रही है बट द डायरेक्शन ऑफ एक्शन इज़ नॉट क्लियर. तो इस डायरेक्शन में वो भाग रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए वी हैव टू ब्रिंग दिस लेग बैक. ओके, and then same for the arms. You can drag these arms और उनका ओवरऑल पाथ ऑफ एक्शन देखोगे कहाँ से आ रही है और किस तरफ जा रही है. Like this arm is coming from up और उसके बाद ये नीचे जाएगी and then you have to follow the path of action. So maybe left arm के लिए your path of action will be like this, and for right arm it will be like this maybe. और head का जो path of action है वो कुछ यूँ था, नीचे आया हेड एंड देन एंटिक में चला गया एंड देन इट विल गो अप लाइक. सो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड हैव अ पाथ ऑफ एक्शन, गुड वन, एंड यू कैन फॉलो दैट. एंड सेम ओवर हेयर, द सिल्हूट इज नॉट क्लियर, सो वी हैव टू ब्रिंग द आर्म आउट मे बी
I know he has big arms and big hands. उसकी जो हैंड है they are so huge. So थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, but you really try that. You can improve the overall silhouette of the pose. Same over here. These hands, they are fighting with the silhouette, so maybe you can clear that. Bring this arm a little left, and then same for this arm. Try to clear the silhouette of the pose. Yeah, I feel like कि ये लेग थोड़ी सी स्टक हो रही है, so maybe you can cut this frame और इस लेग को थोड़ा सा यहाँ पे ले आओ, and then he can exit early. उसके बाद आ जाती है हमारी लैंडिंग. The landing is nice, but I feel like we can really try to sell because it is so cartoony, so maybe we can rotate these legs like this. उसमें drag की feel add करने के लिए, then this pose will be super nice. And I don't know about the rig, but you can maybe bring this pole vector out for the knees. तो हमें एक अच्छी सी सिल्हूट मिल जाएगी, एक स्क्वाश पोजीशन मिल जाएगी. राइट नो इट इज़ नॉट दैट क्लियर कि ये स्ट्रेच पोजीशन है या स्क्वाश पोजीशन है. सो इसको सेल करने के लिए यू कैन एग्जैजरेट दिस, इसको पोल वेक्टर को बाहर ले आओ, एंड देन यू कैन रियली स्ट्रेच द ओवरऑल लेग. Same over here, we have to, because he is going from he is coming towards us, तो हमें कुछ डायरेक्शनैलिटी के लिए कुछ चीज़ों को लीड और फॉलो का रूल अप्लाई करते हुए एनिमेट करना है. सो मे बी एंटिक के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ब्रिंग इट ओवर द राइट साइड, एंड देन ट्राई टू क्लियर दिस सिल्हूट. राइट नो द सिल्हूट इज नॉट दैट क्लियर बिकॉज द फुट इज फाइटिंग विद दैट. तो यू हैव टू फाइंड अ नाइस पोज फॉर दिस frame over here. It will be antique pose, and then you can lead with the legs. Head अभी right की तरफ ही रहेगा. Same over here. Head पीछे रहेगा, and legs they will lead the action. So try to apply this lead and follow rule over here. Because legs they are the one who is generating the energy, तो वो पहले में भी जाएंगी, and then you can follow the body over here. So maybe over here same thing, the legs can be like this and these guys can follow that. Same किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को मूव करें from one position to other, अगर वो स्ट्रेट मैनर में मूव कर रही है it will be boring, but if you lead one thing and then another thing will follow, maybe उसका लोअर पार्ट लीड कर रहा है, बॉडी इसको फॉलो कर रही है like this, it will be looking interesting. तो शुरू में क्या हो रहा है कि इसकी हिप एरिया इसको लीड करेगा, एंड देन हेड विल फॉलो दैट, और उसके बाद हेड आगे की तरफ आ गया. सो वी हैव टू अप्लाई दैट रूल ओवर हेयर. अभी क्या हो रहा है, इट इज़ सुपर स्ट्रेट, देयर इज़ नो डायरेक्शनैलिटी ऑफ मोशन. तो मे बी इधर उसकी बॉडी कुछ यूं लीन करेगी, एंड देन यू कैन ब्रिंग हिज बॉडी ओवर हेयर. उसके बाद इसकी बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, उसका फोकस यहीं पे रहेगा. राइट नो द आई कैन सी द आई लाइन इज नॉट दैट क्लियर, तो ट्राई टू फिक्स दैट, एंड देन यू कैन गो इनटू दिस एंटिक पोज, ब्यूटीफुल एंटिक पोज. मे बी इट इज़ अप टू यू इफ़ यू ब्रिंग द लेग अप. अगर ऊपर लेके आना चाहते हो इट इज़ टोटली अप टू यू, बट ट्राई टू रियली पुश दिस लाइन ऑफ एक्शन मैन. यू कैन डू दैट. और इस नेट को यहाँ पे ले आएंगे हम लोग, and then right now our silhouette is not that clear, so you can really push that. Same over here, इसको थोड़ा सा और पीछे ले आओ, and then over here you can really try to इस नेट को एंड पे लेके आना है हमने. पहले इसकी हिप लीड करेगी, and then the chest, उसके बाद हेड आएगा, and then the net will come. So maybe यहाँ पे नेट कुछ यहाँ पे होगा, मे बी लाइक दिस. तो इसको थोड़ा सा डिले कर दो या इसको थोड़ा सा अर्ली कर लो, इट इज़ अप टू यू. सो यहाँ पे इसका नेट आ जाएगा. एंड सेम ओवर हेयर, यू कैन इम्प्रूव द सिल्हूट ऑफ द पोज एंड टू सेल दिस स्क्वाश पोजीशन. एंड ओवर हेयर you can drag this hand a little bit and then he will come later. Right now I feel like यहाँ पे एक frame missing है, so we can add the drag
over here, and you bring this arm a little further ahead, उसको exaggerate करो और उसको बाद में लेके आओ, तो उसकी ओवरऑल path of action कैसी होगी, कुछ यूँ हो जाएगी. Right now it is like simple path of action, यहाँ से आता है and then it's stuck here. यहाँ पे जो stuck की feel है उसको ख़त्म करने के लिए you can go forward and back, overshoot, settle back, and then over here you can change the pose of the hand from fist to maybe open a little bit, लेकिन ये tense होगा. और उसकी आई लाइन को हमेशा ख्याल रखो कि वो कहाँ पे कैरेक्टर है, उसकी आईज उसको देख रही हैं कि नहीं देख रही. सेम ओवर हेयर, इसकी आईज उसको देखेंगी. और अभी ये एक्शन ख़त्म होगा एंड देन दिस गाय विल ट्राई टू मूव. तो अभी हम ना थोड़ा सा फाइट कर रहे हैं कि अभी ये एक्शन ख़त्म हुआ नहीं है एंड दिस गाय स्टार्ट मूविंग. इसको 3 फ्रेम डिले करो, 3 से 4 फ्रेम डिले करो, तो हमारा फोकस यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा. और इस पोज से इस पोज में जाने में हमें ख्याल रखना है उसकी ओवरऑल स्पेसिंग को. राइट नाउ आई कैन फील देयर आर सम स्पेसिंग इश्यूज, तो ट्राई टू स्मूथ दैट आउट. द हेड हैज़ सम जिटर्स ओवर हेयर, तो उसकी ओवरऑल पाथ ऑफ एक्शन को, उसकी स्पेसिंग को देखो. एंड देन दिस पोज कैन बी इम्प्रूव्ड, मे बी ब्रिंग दिस आर्म एंड एल्बो लाइक दिस, एंड इस आर्म को थोड़ा सा बाहर ले आओ टू रियली इम्प्रूव द सिल्हूट ओवर. सेम मूवमेंट करनी है उसने. दिस इज़ बिग एक्शन, तो वी हैव टू हैव समथिंग इन द आईज, कुछ थिंकिंग प्रोसेस होगा, and then he will react accordingly. So he will be like changing his expression before this like big angry moment over here. So he is shocked, like he cannot catch that. It could be frustration, it could be anger, something like that. So यहाँ पे आप एक take add करो and then he will go into this beautiful एंग्री पोज वी हैव ओवर हियर. इसकी ओवरऑल लाइन ऑफ एक्शन को एग्जैजरेट कर दो. लाइक राइट नो इट इज़ टू स्ट्रेट, एवरीथिंग इज टूवर्ड्स कैमरा, सो उसको हम चेंज कर सकते हैं. सो मे बी यू कैन ट्राई टू ऐड दिस पोज, लाइक लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा पुश करो, उसको उस तरफ रोटेट करो, एंड देन ट्राई टू हैव दिस ब्यूटिफुल सी शेप ओवर हेयर. राइट नो वी हैव स्ट्रेट लाइन. सेम फॉर द हेड, you can rotate that, और उसकी स्मुची को ब्रेक कर सकते हो. मे बी द आर्म्स could be here और फिंगर्स कुछ यूँ होंगी इसकी. एंड देन यू कैन क्लियर दिस सिल्हूट बाय ब्रिंगिंग द एल्बो ओवर हेयर. उसको हैंड को थोड़ा सा लेफ्ट ले जाओ लाइक दिस, एंड इट विल बी नाइस. ओके, सेम ओवर हेयर मैन, सेम ओवर हेयर. अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है, सो वी हैव टू हैव एंटिक पोज. सो मे बी मूव, सेम पोज रखो बट ब्रिंग द बॉडी ओवर द राइट, और उसके बाद यू कैन रियली पुश दैट पोज. तो मे बी उसकी आर्म कुछ यहाँ पे होगी. इट इज़ सुपर एग्जैजरेटेड, यू डोंट हैव टू फॉलो 100%, बट द आइडिया इज़ देयर. ओके, और यहाँ पे सेम इसकी जो लोअर हिप एरिया, इट विल लीड द एक्शन, और उसका हेड उसको पीछे रहेगा. And over here it is too down, don't do that, but bring it a little high maybe. But the overall idea is to introduce some arcs over here, and then he will be in this pose. इस arm को पीछे ले आओ, and then you can really exaggerate the silhouette of the overall attitude. Okay, और उसको angry pose बनाओ उसको. Right now the eyebrows they are up there, so he don't feel like he's super angry. So he's like, so bring them down the eyebrows. Yes, super nice. Smurf की बात है. So Smurf में क्या होगा, like same directionality. तो यहाँ पे Smurf is running away from this guy, तो ये उसको देखेगा. I feel like we can improve that. और overall body को अब lean करो इस तरफ, and then you can bring the arm over here. उसकी silhouette को हम लोग clear कर सकते हैं. So right now he's running like in towards the camera in a straight manner, which is nice, but it is not interesting enough.
सेम ओवर हेयर ही इज़ लुकिंग देयर। और अब उसको क्योंकि जाना है लेफ्ट से राइट, सो ही हैव टू ब्रिंग हिज बॉडी टुवर्ड्स हेयर। तो उसको लीन करना है एनर्जी गैदर करने के लिए, ही हैव टू चेंज हिज ओवरऑल लाइन ऑफ एक्शन ओवर हेयर, और उसके बाद वो राइट की तरफ जाएगा। सो डायरेक्शन चेंज में क्या होता है, सो वी हैव टू लाइक ही इज़ रनिंग स्ट्रेट बट ही इज़ आल्सो गोइंग साइड टू साइड। तो उसको कुछ क्या करना है, अगर उसको लेफ्ट जाना है ही हैव टू गो एंटिक पोज और समथिंग लाइक दैट। उसकी बॉडी को लीन को यूज़ करते हुए हम लोग उसको सेल कर सकते हैं डायरेक्शन चेंज को। लेट्स से दिस इज़ अ बॉक्स, उसको लेफ्ट से राइट आना है, तो मैं ये करूँगा कि उसको थोड़ा सा लेफ्ट मूव करूँगा, रोटेशन ऐड करूँगा, एंड देन आई विल ब्रिंग दिस गाय टुवर्ड्स हियर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यूँ लीन करेगा मे बी, एंड देन द हेड विल बी मे बी स्टे हेयर, और उसकी बॉडी कुछ यूँ लीन करेगी, तो हमें एक टिल्ट मिल जाएगा ओवरऑल बॉडी में। तो हमें इस टिल्ट को इंट्रोड्यूस कराना है यहाँ पे, जैसा हमने इस करेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था। ओवर हेयर वी हैव अ नाइस टिल्ट इन द बॉडी, उसको ये नज़र आया, he looked into that, and then over here his head is here, और ये इसको देख रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच। और इसकी बॉडी नीचे से यूँ राइट की तरफ आ रही है खुद को रोकने के लिए, ओके, बिकॉज ही इज़ रनिंग फॉरवर्ड बट आल्सो साइड टू साइड, ओके। आई कैन रियली स्टॉप ओवर हेयर। So this is rough pose, you can change that, it is, you don't need to copy that. The basic idea is there कि वो राइट से लेफ्ट आएगा, he have to stop him by using the legs. वो legs पहले आएंगी, उसको यहाँ पे देख रहा है, his arm could be over here, and then you can go into this antic pose with nice transition. This part you have to explore that, okay. एंटिक पोज में आएगा, सेम arms they are fighting with the silhouette, maybe you can bring them over here, और इसकी सिल्हूट को क्लियर करो, एंड देन यू कैन जंप। तो यहाँ पे बॉडी उसकी, बिकॉज इट गोइंग टू ट्विस्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो उसको हमें एंटिक में क्या करना है, उसको उल्टा करना है। सो वी हैव टू ब्रिंग हिम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो then you will have this moment over here, okay? तो ये ट्विस्ट करेगा खुद को यहाँ पे, you can exaggerate the overall, you can introduce this C shape over here। अभी ये straight है, it is very straight, तो ये C shape आ सकती है, squash we can tell that, क्योंकि यहाँ पे stretch हुआ था and then he have to squash। so उसकी arms को ऊपर ले आओ, make it beautiful, सिल्हूट को अच्छा करो। सेम फॉर दिस, ब्रिंग द आर्म्स ओवर हेयर, दिस सिल्हूट इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, तो क्लियर करो, एंड देन यू हैव लाइक आफ्टर स्क्वाश यू हैव दिस स्ट्रेच पोजीशन। तो स्क्वाश एंड स्ट्रेच दे वर्क टुगेदर एक्चुअली, ओके। जब स्ट्रेच आएगा देन स्क्वाश विल कम, और स्क्वाश के बाद स्ट्रेच आता है। यू कैन नॉट गो फ्रॉम स्क्वाश टू स्क्वाश पोजीशन, ओके, एंड देन यू कैन ड्रैग द आर्म्स ओवर हेयर, आर्म्स को ड्रैग करो, and then you can go into this pose, same, you have to work on the arms. I really love this, but you can bring maybe this arm over here, इस arm को यहाँ पे ले आओ, so really sell this moment of putting his arm, इनको वो head पे रख रहा है ना, so you have to clear that, so maybe you can keep the hand over here, something like that. So maybe he is looking down. उसके बाद जब उसका हैंड आएगा then he will go into antic pose, और उसके बाद इस पोज में चला जाएगा वो। So maybe he will go back and have something like disbalance kind of feeling, थोड़ा सा disbalance होगा यहाँ पे। So after that, तो यहाँ से यहाँ की जो transition है, it will be like you have to find a nice path of action for the head, and then you can go into antic pose, very beautiful antic pose over here। वही चीज़ है कि path of action यूँ थी जब disbalance था, then we have to change that, उस C curve को हमने introduce करवाना है antic pose को, something like that, and then he will go forward,
like over here he's going forward. तो हमें ओवरऑल पाथ ऑफ एक्शन को देखना है कि वो कैसा होगा हेड का ओवरऑल. The hands they are fighting with the silhouette, इसको clear कर लो. And then over here I feel like the character is suddenly like spacing wise कुछ मुझे issues लग रहे हैं. So we have to sell that. Maybe this box is sucking him, so maybe you have to introduce some effect. और इसमें कुछ मूवमेंट आएगी जो कि उसको पुल कर रही है. So we have to find the idea over here. So maybe if he is jumping तो उसकी spacing को हम देख सकते हैं, उसकी ओवरऑल silhouette को हम देख सकते हैं. Maybe he is antic, we can add antic over here and then he might pushing. So यहाँ पे clarity की थोड़ी सी कमी है, we can fix that. So we have to understand कि ये खुद उसके अंदर जंप कर रहा है या वो उसको सक कर रहा है अंदर की तरफ. So यहाँ पे maybe you can add a little bit of effects, have that moment over here. और spacing wise you can decide okay ये यहाँ पे शुरू में it will be ease out and then उसकी spacing बढ़ती जाएगी, या तुम ये चाह रहे हो कि यार शुरू में इसकी spacing slow हो and then यहाँ पे जब वो air में है, वो antic pose में है, you can slow that down and then he will be faster later. So you have to decide that. Awesome man, awesome job. I really love that man. I really love your animation. You have a lot of potential. I can feel that. Just try to work on your like silhouettes and lead and follows and your path of actions. And yeah, you have a lot of potential to exaggerate things. Some areas you are just rocking, like they are super awesome. Overall it is super nice. Best of luck for your animations, man. Okay, take care.